आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जनरली वाइट ये तीन टाइप्स की होती है टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। आइए हम देखते हैं कि क्या होता है। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाट डज वाइट बॉक्स टेस्टिंग फोकस ऑन, टाइप ऑफ टेक्निक्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसे टेस्ट करने के लिए ये सब टेस्टिंग मेथड है कि वो सही से प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। जो हम आउटपुट इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट सही प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है, उसको टेस्ट करने के लिए ये सब टेक्निक यूज की जाती है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसमें देखते हैं व्हाट डज व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग फोकस ऑन। किन चीजों पे व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग है वो फोकस करती है। फास्ट चेकिंग, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर द वेरियस execution path within an application to ensure that all condition statement are correct and necessary and efficient। पाथ चेकिंग क्या होता है? कोई भी एक पाथ होगा। व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग क्या करता है? पाथ चेकिंग करता है कि जितने भी जो जो फ्लो हो रहा है, जो भी डेटा फ्लो हो रहा है या जो भी पाथ चल रहा है उसमें और जितने भी सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो सब ट्रू है कि नहीं है, मतलब ठीक है कि सही है कि नहीं है, वो सब चेक करता है। आउटपुट वैलिडेशन, दिस इंश्योरमेंट द वेरियस पोटेंशियल इनपुट्स टू अ फंक्शन and ensure that each provides the expected result। Security testing, static code analysis, and other white box testing techniques are used to identify potential vulnerabilities within an application and validate that it flows secure development best practice। लूप टेस्टिंग, लूप जितने भी हमारे लूप्स लगे रहते हैं प्रोग्राम में वो हर एक लूप ट्रू कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन है, तीनों कंडीशन है वो चेक होता है। Does the loop within an application to ensure that they are correct, efficient, and properly manage the variables within their scope। अब data flow testing, track variables through the execution path of a program to ensure that variables are declared, initialized, used, and properly manipulated। Data flow testing क्या होती है कि जो जिस टाइप से हमने कोड किया है, जो प्रोग्राम है वो किस डेटा में फ्लो हो रहा है, वो सही है या नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल देखें तो हमने किसी को पैसे देना है, तो उसको हम कैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब वो बेनिफिशियरी ऐड होगा तब हम करेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, पहले उसको बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, फिर उसमें चूज करेंगे कि कौन सा उसका बैंक है, ठीक है। फिर उसका एक निक नेम देंगे, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो फ्लो हो रहा है, डेटा का फ्लो हो रहा है, उसे चेक करता है ये। तो अब हम बात करते हैं टेक्निक्स के बारे में, कितने टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग, ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग है, वो डायनेमिक टेस्टिंग के अंडर में आता है। और व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग में चार मेनली टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है: स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन कवरेज, कंडीशन कवरेज, मल्टी कंडीशन डिसीजन कवरेज। स्टेटमेंट कवरेज, one of the main objectives of white box testing is to cover as much of the source code as possible। Code coverage is a measure that indicates how much of an application's code contains unit tests that validation its functioning। Using concepts such as statement coverage, branch coverage, and path coverage, it is possible to check how much of an application logic is really executed and verified by unit tests suite। This difference white box testing technique are explained below। इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग है वो किन तीन चीजों को, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज एंड पाथ कवरेज को लेके चलती है। इन तीनों में ये सब चीज टेस्टिंग होती है। और ये मेनली किस चीज पे, यूनिट लेवल पे ये
टेस्टिंग होती है यूनिट लेवल पर। बोलता हूँ जितने भी मॉड्यूल्स है, जितने भी मॉड्यूल्स, हर एक मॉड्यूल चेक होता है उसमें, हर एक लूप चेक होता है, और हर एक इफ एल्स कंडीशन चेक हो रही, सारी चीजें चेक होती है। इसलिए हम इसके वाइट बॉक्स टेस्टिंग, और वाइट बॉक्स टेस्टिंग का एक टेक्निक है स्टेटमेंट कवरेज। स्टेटमेंट कवरेज का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट इंटू 100। जितने भी हमारे नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो प्रोग्राम है, जितने भी एग्जीक्यूट हो चुके हैं सक्सेसफुली, वो अपॉन में जितने हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट है इंटू 100 कर देंगे। ये उसका एक एग्जांपल है, स्टेटमेंट कवरेज एग्जांपल। रीड ए इफ ए ग्रेटर देन 6 then b goes to a, and if print b, here is an example, statement coverage is 100%। ये फ्लो डायग्राम है उसका, हम देख सकते हैं। सेकंड है डिसीजन कवरेज। डिसीजन कवरेज इज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मेथडोलॉजी that reports the true or false result of each boolean expression present in the source code। डिसीजन कवरेज क्या है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की एक मेथडोलॉजी है जो क्या रिपोर्ट करता है, ट्रू और फॉल्स जो भी बुलियन फंक्शंस हैं कोड के अंदर, उसका ट्रू और फॉल्स, ये गलत है या सही है, ये बताता है। द पर्पस ऑफ डिसीजन कवरेज टेस्टिंग is to cover and validate all available source code by generating that each branch of each potential decision point is traversed at least one. A decision point is a point when there is a possibility of each occurrence of two or more outcomes from control flow statements, such as an if statement, a do while statement, or a switch case statement। ये तीनों चीजों का यूज करके ये डिसीजन कवरेज स्टेटमेंट बनी है। Expression in this coverage can become difficult at times। कभी कभार ये जो डिसीजन कवरेज में एक्सप्रेशन है वो डिफिकल्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट अचीविंग 100% कवरेज इज क्वाइट डिफिकल्टी। इसमें 100% कवरेज आउटकम लेना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिसीजन कवरेज नंबर ऑफ डिसीजन आउटकम एक्सरसाइज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिसीजन आउटकम। ये एग्जांपल है डिसीजन कवरेज एग्जांपल, देख लेते हैं हम लोग। read A, read B, C equals to A minus 2 into B। If C less than 0, then print C negative। And if last हमारा condition coverage are also known as expression coverage। It is a testing method for testing and evaluate the variables or sub expression in a conditional statement। The purpose of condition coverage is to examine the outcome of each logic condition। इसको हम क्या बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन कवरेज भी बोलते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स और स्विच केस हो गए, गो तो, ये सब हो गए, ये सब चेक करती है ना। ओनली एक्सप्रेशन विथ लॉजिकल ऑपरेंड एंड एंड ऑपरेंड इज considered a logic operand if it has its output as either true or false, are examined in this coverage। Condition coverage does not ensure complete decision coverage। जो कंडीशन कवरेज है वो कंप्लीट डिसीजन कवरेज नहीं देती है। मल्टी कंडीशन कवरेज, इन दिस टेस्टिंग टेक्निक all the different combinations of condition for each decision are evaluated। For example, we have the following expression। हमारे पास जैसे expression है, if A or B, yeah, then print C। So in this case, the test case would be as given below। Test case 1, A true, B true। Test case 2, A true, B false। Test case 3, A false, B true। Test case 4, A false, B false। The point to be noted there is that in this example we have two expressions A and B, and as a result we have four test cases। So similarly for three conditions we will have 8 test cases।
Okay. Also, the generally formula for multiple condition coverage is that for n conditions, there will be 2n test cases. वाइट बॉक्स टेस्टिंग को टेस्ट करने के लिए कुछ टूल्स आते हैं, तो वो देख लेते हैं। वेरा कोड है, रिपिंट है, सिफिक्स है, गूगल टेस्ट है, ईमा है, एन यूनिट है। और भी बहुत सारे होते हैं, बस कुछ मेनली टाइप्स ये हैंगे। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है वाइट बॉक्स टेस्टिंग? इट हैज सिंपल एंड क्लियर रूल दैट लेट टेस्टर नोन व्हेन टेस्टिंग इज कंप्लीट। The techniques are easy to automate, which result in fewer tests needed and smaller expansion for developers. It shows bottlenecks, making optimization easy for programmers. Test terms can start work without waiting for the completion of UI development, as most course paths are covered in the code. Testing is more thorough. It helps remove code that is not essential to the program functional. So अब हम देख लेते हैं disadvantages of whiteboard testing. It requires significant resource, including a tester who know the code well, and it's a good programmer. This high skills level increase testing expenses. In many cases, testing every possible condition in the code is not possible due to time and budget constraints. Since it checks the functionality of the testing code, it cannot find missing functionality in the program. ये क्या करता है कि प्रोग्राम के अंदर फंक्शनलिटी तो टेस्ट करता है, बट जो भी मिसिंग फंक्शनलिटी है उसे फाइंड नहीं करता है। टेस्टर मस्ट बी रीराइट द टेस्ट cases when part of the code uh, undergo residings and rewrite. So ये हमने देखा